अब हम आ जाते इस टर्म पे जो कि जड़ है, जो कि बेसिस है क्रिमिनल लायबिलिटी का, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी बेंसिट्रिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो देखो क्या लिखा आता है। Act itself is not criminal unless accompanied by guilty mind. That means both must be there. A mere act without a guilty mind will not amount to an offense. Act itself is not criminal. फाइल करने का एक्ट मे नॉट बी क्रिमिनल, बट इंटेंशन दिमाग में क्या है, दिमाग में गिल्टी माइंड है कि आई हैव टू किल हिम। बोथ हैव टू बी कनेक्टेड, बोथ हैव टू बी टुगेदर, देन ओनली द क्रिमिनल इट विल बी क्रिमिनल। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? पहले हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एक्टस रियस, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम एक्ट है, देन मेंस रिया व्हिच इज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। ये एक्ट है मुक्का मारना, दिमाग में क्या है, इसका नाक मुंह तोड़ना, दोनों का इकट्ठा होना ही क्राइम है। So what is the act? When we say actus, it means an act resulting into after a human act which results in a consequence. Yes, which is prohibited by law. This consequence, which is a result of a human conduct, human act, must be prohibited by law, and as far as IPC is concerned, it should be punishable under the IPC. Some human conduct. अब इसमें एक वर्ड और ऐड हो रहा है धीरे धीरे, वो है voluntary act. What do you mean by voluntary? क्या समझ आता है voluntary word से? अपनी मर्जी से, which is not forced. It is not forced. मर्जी से, I'll say इंग्लिश में अगर इसको करें तो willingness कहते हैं। He says not forced. That means it should be free consent of mind, no pressure, no coercion, no undue influence, कोई ऐसा फैक्टर नहीं। अब इसमें दो चीजें और ऐड होंगी। दो चीजें कौन सी है? rather तीन, सॉरी। intention, knowledge, and reason to believe. In this order, it shows their seriousness. So what is intention? What is intention? हाँ जी बताइए। What do you understand? मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे डेफिनेशन दो। अगर मैं कहूँगी मेरी इंटेंशन ये है। Intention is like something that I'm thinking to do. थोड़ा सा Intention is something that I'm thinking to do. You are thinking to do. Thinking बेसिकली इरादा सर।
है? किसी भी चीज को करने का इरादा अगर आपके दिमाग में है तो वो इंटेंशन। हाँ, तो इरादा को, बिल्कुल सही कहा, इरादा को हम अगर इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? डिजायर. सो इंटेंशन इज a desire to have a particular consequence. मेरी इंटेंशन उसकी कार चोरी करने की है. It's a strong desire emanating from my mind. So my intention shows my desire. Desire to have what? To have a particular consequence. मैं उसको मारना चाहता हूँ. मारना चाहता हूँ. I intend to kill B. That means I have a desire to see that that man is dead. I have a desire to own his or occupy or possess his car. That is my desire that the car should come to me, should be under me. That is the consequence. So intention is the strongest form of human guilty mind. Strongest, क्योंकि अंदर से डिजायर की इच्छा है. सिर्फ आइडिया ही नहीं है, आइडिया प्लस इच्छा. आइडिया यहाँ है, इच्छा तो दिल भी साथ में आ गया ना. दिल से चाहता हूं मैं उसको मार दूं. मारना is there in my mind that that fellow should be dead. But I should kill, I should see that he is dead. I may not directly kill him, I may engage somebody. But that is my desire. और किसी भी चीज करने की अगर डिजायर है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ गिल्टी माइंड हो जाता है. राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इज इट क्लियर? इंटेंशन, इंटेंशन के पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है. स्ट्रॉन्ग बिफोर डिजायर होती है. डिजायर टू हैव ए पर्टिकुलर consequence. Is it clear? Now we come to pardon. Yeah. Now second part, second term, knowledge. What is knowledge? It is something in our conscious mind. होशो हवास में मुझे ये पता है कि जो मैं करने जा रहा हूं इसका रिजल्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. इफ आई स्टैब समबडी इन द एब्डोमेन, व्हाट नॉलेज आई हैव गॉट? एक्ट इज टू स्टैब दैट पर्सन in the abdomen or upper part. What is there in my mind? I may not be killing him. I may not have a desire to kill him. But my mind is quite clear. My conscious mind is quite clear that this act is likely to cause his death. That is knowledge. Knowledge of the consequence of my act. Are you getting it? Knowledge is that part which is there in the conscious mind about something which might happen, which may not happen also. But there is a likelihood that this may happen. That's the knowledge. उस एक्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो मुझे, मेरे माइंड को पता है. आई कैन फोरसी दैट.
That's knowledge. And third is reason to believe. It is slightly lower than even knowledge, where there is I know the cause. It may cause that. It may cause. And that is my belief. नॉलेज में थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, मुझे पता है इसका एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पर उसमें सिर्फ आई जस्ट हैव ए बिलीफ these things may happen and not otherwise. So these are the three stages, which are three things which are happening in my mind, which are form of a guilty mind. Mens rea. And the consequences also of the act may be an act which is resulting in a particular consequence where it is supported or it is strengthened by my desire. Second, it is the knowledge, likelihood, and which my conscious mind is quite aware of. And here there is a belief in my mind. Yes, it may happen. Now, all these three plus willingness without any external factor will be a voluntary act. This has been beautifully explained in BNS also. Last में देखेंगे. But is this clear? Intention, knowledge, reason to believe, and willingness to do that. That is the voluntary act. Yes, sir. Right? Sir, sir, please explain knowledge and reason to believe once again. I'll do that. अभी आ रहा है वो. अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ये समझो अभी एंड नहीं हुआ, आगे आएगा कि इंटेंशन वर्सेस नॉलेज. नेक्स्ट स्लाइड में भी ह्यूमन कंडक्ट which is voluntary act likely to produce some consequences, and those consequences are prohibited by law. This is what we are talking about, actus reus. So punishment is provided. So it's a subjective concept. Now we are talking about act. Act is a physical positive act. I'm contributing directly, forcefully, through my action, through my physical act. I give poison to somebody. I mix poison in that person's food or drink. That's a positive, a physical act. That is an act. Okay? Now we come to this omission. Omission is what? A failure to do something which law expects from me. A person's wife is very badly ill. She's bedridden. She can't move out on her own. She can't cook food or pick up food for herself. Right? And whose duty it is to see that she is fed and she's treated? That lady's husband or maybe the children. Let's take the case of husband and wife. The lady is ill. She needs treatment, she needs medicine, she needs care. And food, of course. But
And whose duty it is? The duty is, law says the husband should take care of that. Now, husband has an intention, a desire that this lady should die. What he will do? He will stop giving her treatment or stop giving her food. He's not doing any positive act. Zahar dena is a positive act. But here he's not doing anything. He's omitting to do his duty. The consequence of both are same, the death, isn't it? The positive act of putting poison or strangulating is positive act. It's an act. Depriving that person by not giving that person food, treatment, etc., where the law expects you to do that. पड़ोसी नहीं, मोहल्ले वाले नहीं, हस्बैंड है, ये बेटा है, ये बेटी है, कोई भी है जिसके ऊपर वो लीगल ड्यूटी है, वो कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं कर रहा. सिंपली वो बेचारी हाय हाय कर रही है, कुछ भी कर रही है. दिस फेलो इज नॉट बॉदर्ड. दिस फेलो डजंट गिव हर एनी मेडिसिन और एनी फूड. Will that amount to omission or not? That will amount to omission. But look, the resultant is same, the consequence is same. It is resulting in the death to that person. So, act will include omission or not, because law talks about the consequence, result. Law doesn't talk about the act. An act which results in a human conduct which results in a consequence which is prohibited by law. And that is why an act includes omission. ये आता है क्वेश्चन, और आपको ये एग्जाम्पल देना है, उस पर केस लॉ भी है. So, act will include omission. This is what our IPC also says. Without any positive act, a criminal liability responsibility may occur. Section 32 says, act includes omission. ये थोड़ा सा सेक्शन याद करना पड़ेगा, 32 and 33. Acts plus illegal omission. Illegal, not mere omission. सड़क के किनारे पे कोई बंदा बीमार है, ये मर रहा है, आपके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, आप ह्यूमैनिटेरियन उस पर कर सकते हो. लीगल ड्यूटी नहीं है कि यू शुड टेक केयर अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ कि आप उसको खाना देंगे या आप उसको कपड़ा पहनाएंगे या उसको दवाई देंगे. So where the law comes, law puts a duty and you do not perform, but the consequence is same, then it is act is equal to acts plus omission. This is the case, Om Prakash versus State of Punjab. Attempt to murder, illegal omission, वही वाइफ वाला जो केस मैंने आपको बताया, this is the same case. So section 32 means an act includes a series of acts. Omission includes a series of omissions. You want to kill a person, okay? What you do is you give that person some poison. एक डोज दे दिया, उसने डोज पी ली लेकिन मरा नहीं. आपने अगले दिन फिर एक डोज दी. अब उसकी
क्रिटिकल हो गई कंडीशन, पर अभी भी नहीं मरा, आपने थर्ड डे एक और डोज दी, तो यू हैव डन 3 acts, but resultant is what? Is the series of acts finally resulted in his death. वैसे ही ओमिशन का देख लो, आपने एक दिन खाना नहीं दिया, कंडीशन खराब, दूसरे दिन नहीं दिया, फिर फोर्थ कंडीशन खराब, थर्ड टाइम नहीं दिया तो मर गया. तो act will include series of acts, omissions will also include series of omissions, and act includes acts, act plus omission, or acts plus omissions. Series of acts, series of omissions, right? Is this clear? Right? Mains reus generally if we ask any student or any student of law or any person who is knowledgeable about law, his only first reaction is, sir, it is guilty mind. Yes, it is guilty mind. What is guilty then? What makes the mind guilty? Because mind, whatever is happening within our minds, whatever ideas are coming, good or bad, right? If there is a bad idea, bad हमारे नज़र में तो bad होगा कि भाई गंदी सोच हम कहेंगे उसको. भाई गंदी सोच हमारी सोच मोरालिटी के हिसाब से नहीं है, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है. गिल्टी वो है जो लॉ कहता है ये गलत है, तो हम लॉ के हिसाब से देखें. अब लॉ के हिसाब से अगर आपकी इंटेंशन है, कोई आपके दिमाग में कुछ ऐसा खुरापात है, आप मुझे बताइए क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने बनाया, इन्वेंट किया है, जो अदालत जो है, जो कोर्ट है, जज जो है उसको लगाए और कहे हाँ इसके दिमाग में ये इंटेंशन. डू वी हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट in the whole world, not only in India? Has this science reached that level that put a gadget and the answer will come, yes, he has a guilty mind, he has a guilty idea, his mens rea can be read? Is there any such instrument? No, sir. There is no such instrument. अगर होता तो कोर्ट्स का काम तो इतना इजी हो जाता भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. तो अब हाउ टू सी what was happening in the mind of the accused person, the person who has committed an offense, what was happening when he committed that offense? How to judge? The judge will reach to a conclusion that mens rea was there, but there is nothing to measure mens rea. See, as far as your act is concerned, act can be seen, act can be felt, right? Act can be felt by senses, by sight, by hearing, by touch, smell, all senses. But there is no such sense available to the judge, or no such gadget available to the judge which can measure, which can find out whether there was a guilty mind at that time. So judge how they reach this conclusion. Okay, yes, mens rea was there, and a particular type of mens rea. Sir, mens rea, okay, it's very important. What kind of mens rea was there? Coupled with actus reus. We have seen the maxim yesterday. The mere act will not constitute a criminal liability. So what is necessary? What is the essential part of a crime? The other essential part other than the act itself. Act has produced a consequence. उसने गोली चलाई और वो उसको गोली लगी और वो इंजर्ड हो गया या मर गया. कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंस हुआ या तो इंजरी हुई या वो उसकी डेथ हो गई. एक्ट क्या था? गोली चलाना.
अब गोली चलाई क्या उसने जानबूझ के थी? उसके दिमाग में क्या था? डिड दैट पर्सन, द पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, did he have the desire to have a particular consequence? इच्छा थी उसकी। वो कितनी प्रबल, कितनी सशक्त, कितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी, वो कैसे पता चलेगा? या उसके नॉलेज थी कि जो मैं करने जा रहा हूं इससे ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लाइकलीहुड ऑफ something happening। ये कौन डिसाइड करता है? ये माइंड में होता है। इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था, आज से लेके, मतलब कल जो बीत गया उस सेशन से लेके और लॉ ऑफ क्राइम्स के लास्ट सेशन तक मैं आपको हमेशा माइंड की तरफ लेके जाऊंगा। पहले माइंड में क्या हुआ, एक्ट बाद में हुआ, पहले तो माइंड में हुआ। तो वो जो माइंड में हुआ, जो लॉ के हिसाब से गलत है, दैट इज गिल्टी माइंड। रिया, दैट इज विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और मस्तिष्क में, माइंड में, मेंस रिया। So whatever has happened or is happening at the time of commission of an offense, okay, whether that kind, what was the mental condition, what was churning in his mind, and whatever was churning in his mind, whether law prohibits that। किसी का चोरी करनी, मेरे मन में आता है नहीं यार इसने बड़ी अच्छी गाड़ी, मैंने कल भी वो एग्जाम्पल दिया, नई गाड़ी पड़ोसी ने ली, मेरे दिमाग में खुरापात शुरू हो गया, अरे यार मेरे पास भी होनी चाहिए। देखिए जहां तक ये है कि मेरे पास भी होनी चाहिए, वो हर एक की इच्छा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स नॉट मेंसरिया। बट अगर मेरे दिमाग में ये आता है कि किसी भी कीमत पे ये वाली गाड़ी मेरी होनी चाहिए, देखिए दोनों में डिफरेंस। मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए इज नो नॉट प्रोहिबिटेड, इट्स वेरी common to think like that. If I see somebody you know having a good house, a bangla, सबकी इच्छा है, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास यही गाड़ी होनी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब कुछ भी करने में क्या होगा, what will be my next step, that I'll ask him, यार can I have this vehicle, can I borrow your vehicle? I will not own. If you want to own, you will say, do you want to sell it? भी आप बेचना चाहोगे तो मैं खरीद लूंगा। अगर वो बेचना चाहता है तो there is nothing wrong, law permits that। तो it's not bad menstruation, bad intention, no, कोई गिल्टी माइंड नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा चाहे अगर वो मना भी करेगा मैं तब भी लेनी है, वहां गड़बड़ हो जाती है। Because law says कि you cannot deprive other person of his right to possess that vehicle, legal right to possess। I cannot take away a vehicle or any property which I am not legally entitled to have it। किसी की चीज है तो मैं नहीं, law doesn't permit that। But if that idea, that thought comes to my mind कि ये मुझे ये गाड़ी हर हालत में लेनी है, हर हालत में क्या है, बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक इज नॉट एग्रीइंग कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा या मैं आपको बोरो नहीं करने दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कैसे इसको उठाया जाए। और वहां पे जब ये थॉट मेरे दिमाग में आएगी, वहां पे लॉ कहेगा अरे नहीं, यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट डिप्राइव दैट पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब वो गलत दिमाग हो गया, बिकॉज लॉ डज नॉट परमिट दैट। माई थॉट ऑफ owning or possessing that vehicle
is not bad. But how? कैसे? वो गलत है. Right? So what we are talking about here is mens rea, which is galat, which is wrong, which is prohibited by law. That thought. और वही थॉट हमें लेके जाएगी किसकी तरफ? फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. अब सीधा सीधा अगर हम लें कि भाई पड़ोसी की गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, यही लेनी है, वो मना करेगा, वो मुझे हाथ नहीं लगाने देगा, तो मेरे दिमाग में क्या होगा? लेट मी स्टील दिस कार. वही तो तरीका है. चाबी लूं किसी तरीके से या उसको खोलूं, स्टार्ट करूं और ले जाऊं. That is theft. क्योंकि without his consent, I am taking away his movable property without his consent and out of his possession. This is what 378 says. है कि नहीं? भाई पहले मेरे दिमाग में आया क्या? इसको लॉस करना है. कौन सा लॉस? लीगल लॉस. वो लॉस, उसके पास लीगल राइट है उसको पोजेस करने का. ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू पोजेस दैट व्हीकल, दैट प्रॉपर्टी. व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मुझे उससे लेना है. देगा आराम से तो ठीक है, नहीं तो मैं उठा लूंगा. उठा लूंगा मीन्स उसकी मर्जी के बिना, विदाउट हिज कंसेंट. And when I take it away or I move it, I am definitely taking it out of his possession or bringing it under my possession. Move. But the thought came to my mind was wrong, which is not permitted by law. So I am causing a wrongful loss to that person, and also at the same time causing a wrongful gain to myself. Do you agree? Is this picture becoming clear with this simplest example? जो हमारे दिमाग में हर रोज आता है, हम दूसरे की चीज देखते हैं, मेरे ये घड़ी है भाई, मेरे पास भी होनी चाहिए. उसने रोलेक्स की घड़ी पहनी है, मेरे पास भी होनी चाहिए. होनी चाहिए ठीक, पर वही घड़ी होनी चाहिए और उसको मैं हर कीमत पे लेने को तैयार हूं. That's what is happening in my mind. That is what is mens rea. A guilty mind. Right? Now, it is a state of mind. It is happening within the mind. Prohibited by law. Law does not permit that. So, what will constitute the criminal liability? This guilty state of mind plus an act which is resulting in consequences which are prohibited by law. So, if we put together both mens rea plus actus reus, it will make what? It will constitute criminal liability. बिना इसके नहीं होगी, बिना इसके नहीं. कैसे? सॉरी, बिना इसके नहीं होगी इन दोनों के, और इसके भी. एक्टस रियल. आपने आपके गिल्टी माइंड नहीं है, गलत थॉट नहीं है, राइट? गलत आइडिया नहीं है, बट यू हैव एक्टेड, तो लॉ कहता नहीं, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी. इट माइट बी ए mere accident, it might be a mere chance without anything happening in the mind. On the other hand,
if something wrong is happening in the mind, but this is missing, this is not there, हमने किए ही नहीं, उससे आगे सोचा ही नहीं। कल हमारे एक फ्रेंड ने कहा था कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, तो अभी हम उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ये समझ के चले कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इज दैट बोथ शुड बी देयर, a guilty mind should be there and also accompanied by an act which produces consequences। सिर्फ एक्ट से काम नहीं चलेगा, consequences which are prohibited by law। प्लीज ये याद रखिएगा, act itself may not be prohibited, but what it is resulting into, इसके consequences क्या है, वो लॉ परमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वी हैव टू सी दैट, राइट। सो देन मेंस रिया इन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल अनलेस सम एक्ट इज डन विद दैट गिल्टी माइंड, विद सच गिल्टी माइंड, जो थॉट को कन्वर्ट करे रियलिटी में, कॉन्सिक्वेंस में। और दोनों ही, थॉट भी गलत होनी चाहिए लॉ के हिसाब से और कॉन्सिक्वेंस भी गलत होना चाहिए। दैट पुट टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट द क्रिमिनल लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड and I have tried to simplify as much as I could. Still you have doubt, I can repeat. But without having this clarity, there is no point proceeding further. पहले इतना आप खुद अपने दिमाग में ले आइए कि हाँ, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये मेरे दिमाग में बैठ गया है, एब्सोल्युटली क्लियर। Yes, sir.